लेकिन कल मैं यही मैसेज करूंगा कि मैं गांव जा रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। 15-15 मिनट लेट। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा जी, सप्लाई साइड पॉलिसीज। हम्म हमने मॉनेटरी पॉलिसी के फायदे नुकसान कर लिए थे, अब सप्लाई साइड पॉलिसी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है। ठीक है, और इसके अंदर हमने टैक्स रेट्स लिखा, प्राइवेटाइजेशन लिखा, डीरेगुलेशन लिखा। ठीक है, नॉट बैड। शुरू करें। मॉनेटरी पॉलिसी is not the only macroeconomic policy to reduce high rate of inflation. To reduce high rate of inflation. One, another policy to reduce inflation can be सप्लाई साइड पॉलिसी। अच्छा, फॉर अ चेंज इस दफा मैं पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स नहीं कर रहा। मैं क्या करूंगा, एक पॉलिसी लिखूंगा, क्योंकि वी ऑल नो कि सप्लाई साइड पॉलिसी हैज लॉट्स ऑफ पॉलिसीज। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हो गया, टैक्स कट्स हो गया, और उसके साथ ही उसका एनालिसिस कर दूंगा ताकि हमारा एक वो बन सके एनालॉजी। तो एक ये भी तरीका आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है जी। वन टूल ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसी, इतनी तुमने टेंशन ली हुई थी पेपर की, कैंसिल हो गया। वन टूल ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसी क्या लिखें, इज टैक्स कट्स टू इंक्रीज aggregate supply in the economy जी, by shifting, हाँ यहां से, by shifting aggregate supply rightwards, price levels are likely to fall. अब इस दफा हम अनऑर्थोडॉक्स अपने हिसाब से नहीं चल रहे, अब यहीं पे इसकी वैल्यूएशन करने लगा। However, टैक्स कट्स का मसला क्या है, टैक्स कट्स may lead to fiscal deficits which may be financed by borrowing, increasing national debt. Another tool for what? Another tool of supply side policy is privatization, where public sector enterprises
are sold off to the private sector. This, in the long run, will increase productivity. This, in the long run, will increase productivity and efficiency, increasing output and easing inflationary pressures. However, in the short run, privatization may lead to higher prices being charged by private sector entrepreneurs. Private sector entrepreneurs who do not have welfare motive as governments. Thirdly, और क्या होता है भी सप्लाई साइड पॉलिसी में? तीन लिखेंगे बस सप्लाई साइड पॉलिसीज. प्राइवेटाइजेशन कर दिया, टैक्स कट्स कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर कर दें. Thirdly, एजुकेशन हेल्थ केयर कर देते हैं, वो ज्यादा रेलिवेंट है. Thirdly, improving quality and quantity of education and training by the government may also increase productivity, further increasing what? Further increasing aggregate supply in the long run, and hence reducing high inflation. मसला क्या है इसका? However, क्या मसला है? This is likely to increase government expenditure in the short run, increasing aggregate demand. हाँ, लेकिन यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड बढ़ेंगे. हाँ, ये भी क्या ये कहते हैं which may increase inflation. Moreover, such measures
are costly for the government and also take time time to be to affect to increase. हाँ, लेकिन मैक्रो लेवल पे एज सच अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और नहीं कर, ये नहीं करना तो गवर्नमेंट ने और फिर क्या करना है? ये तो है ही अच्छी चीज है। वो तो माइक्रो में देख रहे होते हैं कि इधर पैसा लगा रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट की बजाय उधर लगा देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अगर मैक्रो लेवल पे एजुकेशन नहीं देनी तो फिर और क्या करना है, और क्या प्रायोरिटी है उसकी। ऑल्सो टेक टाइम टू इंक्रीज टोटल सप्लाई। कितना हो गया? बंदे बाहर चले जाए, हाँ लेकिन हो गया ना, दो लिख दिए मसले, बहुत है। ये अब हमने क्या किया, कितना हुआ है? 2 पेजेस, बस ठीक है, पूरे 2, ठीक है। मॉनेटरी हमने सप्लाई साइड पॉलिसी लिख दी है, लेकिन इस दफा हमने सप्लाई साइड पॉलिसी में दूसरी साइंस लगाई है। क्या हमने साथ साथ इवैल्यूएशन की है? तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक पॉइंट दें, इस तरह आप मॉनेटरी पॉलिसी में भी कर सकते थे कि आप इंटरेस्ट रेट बताएं कि इंक्रीज हो रहा है, उसका फायदा उसका नुकसान फौरन दे दें, या फिर आप पूरी मॉनेटरी पॉलिसी बता के फायदे फायदे फायदे, नुकसान नुकसान नुकसान, इस तरह कर लें, या फिर आप फायदा नुकसान जिस तरह हमने भी इसमें किया। तो हमने एक तरह से दोनों चीजें कर ली। ओनली वे, तो ओनली वे नहीं है, और हमने दूसरा बता भी दिया। कंक्लूजन तो यही है कि ओनली वे नहीं है, ठीक है। और ज्यादा कौन सा बेहतर है वो हम बता देंगे। बेशक हम मॉनेटरी की तरफ ही चले जाएं क्योंकि वो क्विकेस्ट है, ठीक है, और डायरेक्टली इफेक्ट करता है, और डिपेंड करता है टाइप ऑफ इन्फ्लेशन पे। डिमांड पुल है, कॉस्ट पुश है, तो उसमें हम बता देंगे कॉस्ट पुश के लिए वो बेहतर है, डिमांड पुल के लिए बस। डिमांड पुल के अंदर फिर मॉनेटरी आती है, इंपोर्टेड जो है वो सप्लाई साइड, उसके अंदर कॉस्ट पुश के अंदर आती है। टू इवैल्यूएट a comparison of macroeconomic policies to reduce inflation, use high rate of inflation must be done. Monetary policy being the quickest relative to supply side and even fiscal policy is most suitable if inflation rate is high. Inflation rate is high and deemed as a macroeconomic priority. Whereas supply side policy takes time to affect supply, increase productive capacity, and
takes time to affect supply, increase productive capacity, and reduce inflation. A long-term solution. लेकिन बस मेंशन कर दें जब उस आपने ऊपर दो मेंशन किए वो कर दें. A long-term solution which takes time to reduce inflation might not be appropriate to tackle a high inflation rate. Moreover, supply side policies are costly to the government. For example, developing infrastructure, cutting taxes, and promoting R&D innovation. Monetary policy, on the other hand, do not require any immediate expenditure by the government. कैसा? However, if if the cause of inflation is cost push, then monetary policy may not be effective in reducing inflation as it affects aggregate demand, not increasing the productive potential of the economy. If such is the case, using supply side policies may be more effective in controlling high inflation.
क्यों नहीं पढ़ने वाला? प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। टाइम का तो इशू है ना, वो मैं लिख दिया। ये 12 मार्क बस फिर अपनी यही है, अपने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को हल करें। नहीं, बस खत्म कर रहे हैं। हाँ, नॉर्मल साइड 20 मार्कर है ही नहीं है इसमें तो। If such is the case, using supply side policies may be more effective in controlling high inflation. यार पॉइंट ही बुला दिए तुमने। If such is the case, using supply side policy may be more effective in controlling inflation. कितना हो गया लेंथ? ऑलमोस्ट 3। बस खत्म करते हैं। Hence, from the analysis and evaluation above, it may be concluded that demand side policies such as monetary policy may be used, may be appropriate to control a high rate of inflation. However, word क्या था? The only way? They are not it is not the only way. However, it is not the only way to control high rate of inflation, as other policies may be more suited depending on the reason of inflation. कैसा? पेन ड्रॉप आसान है, मुश्किल है? पूरे 30 पे खत्म नहीं ना हुआ, मसला ही है। यही तो मसला है ना भाई, खत्म नहीं हुआ। कौन सा था? 5 था। देखते हैं, हो सकता है अंडा आ जाए हमारा। एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और उसकी इफेक्टिवनेस। इंटरेस्ट रेट्स टू डैम्पन एडी, मनी सप्लाई टू डैम्पन एडी, क्रेडिट रेगुलेशंस टू इन्फ्लुएंस बैंक लेंडिंग, बट टाइम लैग, other factors other than interest rates may affect consumer spending. Example, consumer confidence, expectations. क्या बात है, ये सारा काम हमने किया। Should be compared with advantages and disadvantages of at least one other appropriate policy, supply side and or fiscal policy. Relative effectiveness with at least one other appropriate policy. आई बात समझ में? किया आपने ये? It is not necessary within the analysis question. Reference may be made to relative effectiveness of these policies in controlling different. उसने कहा जरूरी नहीं है, लेकिन हमने
कर दिया, टाइप्स भी दोनों जिक्र कर दिए, कॉस्ट पुश, डिमांड पुल। याद रखें पॉलिसीज इन्फ्लेशन में हमेशा कॉज की तरफ से पकड़ें उसको। विच पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू बी इफेक्टिव कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। गुजारा आ जाएगा, मुझे लग रहा है कि हमारे आ जाने चाहिए 8 में से मैं देता हूं अपने आप को। एनालिसिस तो अच्छा था यार, 7 दे दिया, कभी 8 दिए नहीं था, लेवल 3। और 4 में से चलें, बहुत खड़ूस आदमी मिल गया। वैसे अच्छा लिखा है हमने, है ना? अच्छा लिखा है, अच्छा लिखा है। चलो 3 दे दिए, 3 दे दिए, बहुत ज्यादा नंबर दे दिए अपने, इतने मैंने कभी दिए नहीं। ये लेंगे, वाह सर भाई। ये थ्रेशोल्ड फिर इतना लो क्यों होता है? क्योंकि बच्चे नालायक हैं, लिखते ही नहीं है। अभी निकाल के देखो सारे, बेटर पेपर स्क्रिप्ट जब आएंगे, अंडे सब ने, अच्छे बच्चों ने तबाही फेरी हुई। ग्राफ बनाने बैठ जाएंगे इसमें, ठीक है, ग्राफ बना देंगे माइक्रो का, फैक्टर्स नहीं लिखेंगे। समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे ब्लंडर्स इतने अच्छे अच्छे बच्चों ने किए। ये तो इस दफा स्क्रिप्ट्स आने शुरू हो गए हैं पिछली दफा से, तो दिल खून के आंसू होता है। समझ रहे हैं? इसीलिए थ्रेशोल्ड लो है इतना, बच्चे ऐसे ऐसे ब्लंडर्स करते हैं।